Science and Tech. With that, I will request Honorable Chief Minister to address the gathering actions clearly. Thank you. थैंक यू संतोष. रोजा रखने के बावजूद आज लगभग कोई पौने 2 घंटे बोलने के बाद का नतीजा ये है कि बोलना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है. लेकिन मुझे इस बात का बखूबी एहसास है कि 2018 के बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर की असेंबली में जम्मू कश्मीर का बजट पेश हुआ. उसके साथ साथ मुझे इस बात का भी एहसास है, जो मुझे इसका ख्याल आया, कि कम से कम जम्मू कश्मीर में ये पहली मर्तबा है कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला ने फाइनेंस मिनिस्टर की सूरत में बजट पेश किया है. कोशिश हमारी तरफ से हुई कि बजट वो पेश हो जिससे लोगों को फायदा मिले, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ी सी आसानी आए और जम्मू कश्मीर में तरक्की का दौर जो है वो और तेजी से आगे बढ़े. ये हमारा कभी दावा नहीं था कि सारा कुछ एक ही बजट में होगा. न हमारा ये दावा था कि हमारे इलेक्शन में किए हुए वादे सारे एक ही बजट में पूरे होंगे. तो इसलिए मैं यहां बैठ के ये नहीं कह रहा हूं कि सारा कुछ अब हो गया है. हम ये कह रहे हैं कि आने वाले 5 साल के लिए हमने बुनियाद रखी है. बुनियाद मजबूत हो तो उसके ऊपर जो दायरा बनता है, जो स्ट्रक्चर बनता है, वो मजबूत होगा. अगर बुनियाद कमजोर रही तो जो आप उन बुनियादों पर कायम करने की कोशिश करोगे वो रहेगा नहीं. और कहीं पर भी, किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में our emphasis is not on one particular sector. Our emphasis is on taking J&K forward in a balanced manner, focusing on asset creation, focusing on improving the economy. In improving the economy, we want to focus on all 3 sides: the primary sector of the economy, the secondary sector, and the tertiary sector. So that means manufacturing, services. We have looked at all of these. I talked about growing the industrial base of Jammu and Kashmir, starting and expanding our industrial manufacturing areas. I have talked about the startup policy and giving a boost to entrepreneurship. There's also a renewed focus on agriculture and horticulture. Tourism is a major sector of our economy. We are looking to grow tourism arrivals both in Kashmir as well as in Jammu. Horticulture, of course, is an important facet of our economy. So it would be wrong on anybody's part, including mine, to make the case that we are focused purely on one part of the economy. That is on the economic side. On the governance side, as I said, there are initiatives for improved governance, for asset creation, and for improving the social network, the social net that is available to our weakest sections of society. Question from there. Look, I am Anil from PTI. Mursa, you have showcased a lot more programs in your budget. One important factor that we generally talk about is the agriculture or tourism-based economy of J&K. But never has the focus gone to the hydropower.
which is the biggest economy in terms of, in fact, it can be 20,000 crores economy for J&K. You have spelled the new hydropower policy for this thing. Can you specific about the projects, particularly private projects? Actually, in my budget speech, I've said that we are formulating a new hydropower policy. It is currently at the formulation stage within the Power Department. And as soon as we have the policy, the framework of the policy is ready. It's just that it has to be added to. Once the policy is ready, it will be put before the people. But the aim of that policy, again, is to focus on both the generation side, so that we have greater generation, and also on the distribution, transmission and distribution side as well. So that the losses that we have in our transmission and distribution system, those are also brought down. Next. पहले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कम नहीं हुआ है. कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप देखें तो 24-25 जो हमारा आरई है वो 27,544 है. जो हमारा 25-26 का बीई है बजटेड ये है 32,607. तो इसको बढ़ाने की बात है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कमी हुई है, जिसके लिए फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने आपको पहले ही समझाया है. वो इसलिए है कि हमारी पुलिस की बजट और पुलिस पेंशन जो है वो जम्मू कश्मीर की बजट से हटा के मरकजी होम मिनिस्ट्री की बजट पे डाला गया है, इसलिए इसमें कमी आई है. इस बार कंपोनेंट कम हो गया है. पिछले साल था 27,903 बने. आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए ना. पिछले साल की सैलरी में जो हमारी पुलिस है उनकी सैलरी बिल इसमें शामिल थी. इस साल वो सैलरी पुलिस कंपोनेंट जो है वो हमारे बजट से हटा के मरकजी बजट में डाला गया है, इसलिए वो निकाल के ये नंबर कम हुआ है. एम्प्लॉइज की तादाद कम नहीं हुई है. एम्प्लॉइज की तादाद बढ़ेगी, घटेगी नहीं, लेकिन सैलरी कंपोनेंट कम हुआ है क्योंकि वो हिस्सा जो हम पुलिस को तनख्वाह के तौर पे देते थे वो अब हमारे बजट से हटा के मरकज की बजट में आ गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. जहां तक डेली वेजर्स और इनकी बात है, उनके लिए पॉलिसी हमें बनानी होगी. पहले तो ये है कि हमें उनका नंबर तय करना होगा, क्योंकि आप जिससे बात करें नंबर बदलता रहता है. कहीं पे भी एक नंबर हमारे पास है नहीं. जब हमारे पास नंबर होगा उसके बाद उनके लिए हमें क्या पॉलिसी बनानी होगी वो हम तय कर सकते हैं, लेकिन जरूर उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा. और जहां तक आपने एएवाई और बीपीएल वाली बात की, जैसे मैंने शुरू में कहा, हमारा फर्ज है कि जो सबसे ज्यादा मदद के हकदार हैं उनको मिलना चाहिए. तो इस बजट में सोच समझ के हमने एएवाई को जो है मदद की. अब आगे जाके जैसे हमारी माली हालत जो है बदल जाएगी, जिस तरह वो नए प्रोजेक्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स हमारे जो ऑन स्ट्रीम आ जाएंगे उससे हमारी कमाई बढ़ेगी, और कुछ इकदाम उठाए जाएंगे जिससे हमारी कमाई बढ़ेगी. उसमें फिर हम जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं उन्हें भी जो फायदे गवर्नमेंट की तरफ से मिलने चाहिए उनको भी इनमें शामिल किया जाएगा. नहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम के मुलाजिम जो है वो ओल्ड पे रहेंगे, जो नए मुलाजिम लगे हैं वो न्यू पेंशन स्कीम पे होंगे, और इसमें कोई बदलाव लाने की बात नहीं है. जहां तक जर्नलिस्ट के पेंशन्स वगैरह की बात है, ईमानदारी से कहूँ हमने इसके बारे में सोचा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसे मतलब आइडियाज हैं जो आप शेयर कर सकते हो, उसमें फिर आप देख लीजिए ना कितना बर्डन आप उठाने के लिए तैयार हो और कितना आप हमारे ऊपर डालने के लिए जितना चाहते हो. चाहते हैं कि एक वाइब्रेंट प्रेस जो है वो कायम हो. जम्मू का प्रेस क्लब चल रहा है शायद, लेकिन श्रीनगर में चल नहीं रहा है. श्रीनगर का प्रेस क्लब दोबारा चले उसके लिए इकदाम उठाए जाएंगे. You had so many questions that I don't know where to start. One, SRTC daily ridership is more than 20,000. So it's not as if SRTC buses are going empty. And it is our endeavor to augment that fleet and strengthen SRTC's network. So obviously, ladies, when they're able to travel free, both within the e-bus network and SRTC, we believe that it will benefit them greatly. I don't expect anything but criticism of the budget from the opposition, because that's why they called opposition. If they were anything else, they would be in government.
I mean, it would be difficult for you to find me an example where an opposition has come out from Parliament or the Assembly and praised the budget. Therefore, that's not, for me, any sort of criteria. I believe that we have presented a budget that is people-friendly. It's a love letter to the people of Jammu and Kashmir. To that extent, if there are people of Jammu and Kashmir who voted for the BJP, then it's a love letter to them as well. But it's also a love letter to the people who voted for NC, voted for Congress, that voted for PDP, and a love letter to the people of Jammu and Kashmir who didn't vote at all. So let's not be sort of unfair and make this as a love letter only to the BJP. It's a love letter to the people of Jammu and Kashmir. Now, on the third thing, I think that proverb was not an expression of helplessness, because there is a balm. If that proverb had been about the absence of a balm at all, then it would have been helpless. There is a balm, but there are many wounds, which is a fact. I mean, if you go by the numbers that Santosh put in front of you, if you go by the numbers that I put in front of you in the assembly, the fact is that the problems are many, but the resources are limited. And that's why this budget was an exercise in trying to do the maximum good with the least deployment of resources. As our resource position improves, as we move more towards a self-sufficient Jammu and Kashmir, obviously that will change. Now, the question that you asked me, I still maintain that a UT with assembly is by far the worst form of government in the country. I have no hesitation in saying this. I've said this before, I'll say it again. There should only be two systems in this country. Either you have a UT without assembly, or you have a state. Because please remember, union territories were envisaged as territories that were too small to be states. That criteria does not apply to J&K. So, that's it? Okay. UNT. We have the question hour normal morning from 10 to 11. But because of this press briefing, we have actually had a question hour in the evening. And normally the burden of question hour is shared by all the ministers. But for the first time, we had Honorable Chief Minister cornered fully. So on behalf of everyone and on behalf of all departments, let me first thank Honorable Chief Minister for enduring that burden continuously for assembly session and at the same time also for this press conference. Let me also thank Honorable Ministers, Advisor to Honorable Chief Minister for sparing their valuable time for this press conference. Let me thank Honorable Chief Secretary, all the secretaries, administrative secretaries of various departments, all the heads of departments and my colleagues of Finance Department for being here with us, including ACS to Honorable Chief Minister, who we now count as part of Finance Department. Let me then thank all my friends from media, electronic media and print media for sparing their valuable time and being part of this press conference.